Hello, Matujima, and you're watching Hornbilltv's Prime Time. The headlines. 5 Pakistani officers were killed and several others injured after a bomb exploded near one of the buses in a convoy carrying anti-terrorism force personnel on Sunday in Balochistan. New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon arrived in Delhi on Sunday at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. SpaceX and NASA have successfully launched a Crew 10 mission to bring back astronauts Sunita Williams and Buzz Wilmore from the International Space Station ISS. Both the astronauts have been stranded in space for more than 9 months. The United States on Saturday launched airstrikes in Yemen, causing 24 fatalities in an attempt to target Iran-backed Houthi rebels and defend American interests, reported Reuters. This is probably the biggest news from Uttarakhand right now. Cabinet Minister Prem Chand Agrawal has announced his resignation and will submit his resignation to the Chief Minister shortly, reports said. He said he is leaving the ministerial position on moral grounds. Questions were raised after he allegedly made controversial statements were given in the assembly. Continuous protests have taken place in Uttarakhand over the controversial statement. Prem Chand Agrawal had allegedly used abusive language for the Hill people in the house during the assembly session. शहादत हो गई, कैसे चला जाऊं? गुस्से में बोल रहा था मैं, मुझे अलग से ले गए क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूं उनका भी। उन्होंने मुझे अलग लिया है, कहा कि आपको पुलिस से एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहां से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहां से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे ये जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई, तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा रहा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दुनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं।
5 Pakistani officers were killed and several others injured after a bomb exploded near one of the buses in convoy carrying anti-terrorism forces personnel on Sunday in Balochistan. The attack occurred in the Nashik district of Balochistan. Police Chief Zafar Zamanani told media that the blast was so powerful that it damaged another bus near the target as well. The dead and the wounded were immediately transported to a hospital. The Chief Minister of Balochistan, Sarfaraz Bukti, condemned the attack. In a statement, the Balochistan Liberation Army took responsibility for the attack and claimed, as quoted by India Today, the Madid Brigade, the Fidaye unit of the Baloch Liberation Army, targeted a convoy of the occupying Pakistani military a few hours ago in Vibait. Fidaye attacked near Rakshan Mill on the RCD highway in Noshki. The convoy consisted of 8 buses, one of which was completely destroyed in the explosion. Union Minister S.P. Singh Baghel receives Prime Minister of New Zealand Christopher Luxon as he arrives in Delhi. At the invitation of Prime Minister Narendra Modi, New Zealand's PM Christopher Luxon is on an official visit to India on 16 to 20 March 2025. PM Luxon will also be the chief guest and he will deliver a keynote address at the Raisina Dialogue 2025. During his visit to India, a high-level delegation, including ministers, senior officials, business, media and members of the Indian diaspora community in New Zealand will accompany him. Luxon and PM Modi will also meet at Hyderabad House in Delhi on Monday and the leaders will exchange of MOUs. Later in the day, PM Luxon will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan according to MEA. Later, Luxon will meet Union Minister of Health and Family Welfare, JP Nadda. SpaceX and NASA have successfully launched a Crew 10 mission to bring back astronauts Sunita Williams and Buzz Wilmore from the International Space Station. Both the astronauts have been stranded in space for more than 9 months. A SpaceX rocket carrying a new crew has docked at the International Space Station as part of a plan to bring astronauts home. The astronauts were expected to be at ISS for only 8 days, but because of technical issues with the experimental spacecraft they have been there for more than 9 months. The new arrival includes NASA astronaut Anne McClain and Nicole Ayers, JAXA astronaut Takuya Onishi and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov. This marks the 10th crew rotation on the SpaceX Human Space Transportation System and the 11th crew flight to the ISS through NASA's Commercial Crew Program. Sunita Williams and Buzz Wilmore had initially planned a short stay at the ISS last June. However, their visit extended unexpectedly to 9 months. Their return was eagerly anticipated by many, including President Trump, who urged Elon Musk to expedite their return. Hegseth mentioned that President Trump instructed Elon Musk to ensure that astronauts' swift return. President Trump said to Elon Musk, "Get the astronauts home and do it now," and they are responding, he noted. The mission's success is a testament to SpaceX's capabilities in human space transportation. It highlights their role in facilitating NASA's objectives through commercial partnerships. The Crew 10 mission is significant as it continues SpaceX's collaboration with NASA under the Commercial Crew Program. This program aims to maintain a steady flow of personnel between Earth and ISS. As part of this mission, retired U.S. Navy captains Buzz Wilmore and Sunita Williams are being brought back home. Their safe return is a priority for both SpaceX and NASA. This successful launch underscores the importance of international cooperation in space exploration. We'll take a short break. Keep watching. Itu video de ami khan janibo kinaga ami khan laga diet pra tel do komti kuribo moina de tel kina time de komti aro kiman tel lage iman hi kinibi itu bra apuni tel kha to monitor koribole paribo
Subji paka time de tel do bottle bra nohi kena hodai ekta chamos bra nap kuri kena dalibi. Gao ke bar rakhibo karone kisim tel cholai thakibi. Tel ke bar gorom nakribi aro ekbar tel ke cholai dishe kuile itu tel do aro pakabo karone na cholabi. Butter aro ghee nishna khan komti aro lagya amount hi cholabi. Itu video de apni khan janishe ke kinaga nijor laga diet pra tel laga istimal komti kuribo. Ahibi aro dubara janibo ke aji ki sikishe. Moina de tel kina time de komti aro kiman tel lage iman hi kinibi. Itu bara apni tel khado monitor kuribole paribo. Subji paka time de tel do bottle bra nohi kina hodai ekta chamos bra nap kuri kina dalibi. Gao ke bar rakhibo karone kisim tel cholai thakibi. Tel ke bar gorom nakribi aro ekbar tel ke cholai dishikuile idu tel do aro pakobo karone na cholabi. Butter aro ghee nishna khan to komti aro lagya amount hi cholabi. Welcome back. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Sunday underscored the significance of responsible journalism in a democracy, stating that presenting accurate facts to the public is crucial. Speaking at the oath-taking ceremony of the Kharagpur Press Club, CM Yogi emphasized that no constitutional institution, whether the legislature, executive or judiciary, can remain detached from public concerns. The Chief Minister lauded the media's role in fostering transparency and accountability in governance and stressed that journalists must act as a bridge between the government and the people, ensuring that public issues are highlighted and addressed. They even saw the participation of senior journalists, media professionals and government officials. कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर जो आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलित ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी
लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी 1 साल 2 साल, अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसे चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। उन स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, या जब मीडिया के मंच का उपयोग हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके, उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। The Central Reserve Police Force CRPF's 121 Battalion organized a free medical camp in the remote areas of Kathua district, providing essential medical services to over 400 villagers. The camp offered free medicines, treatment and medical checkups to those in need. Rakesh Kumar, Deputy Commandant of CRPF 121st Battalion, explained the initiative as part of the Civil Action Program, a government-run initiative aimed at benefiting local communities. They are running 4 medical camps by 2024 to 25, out of which 3 have already been organized. और किस प्रकार आम लोगों के लिए सहूलियत के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं? भारत सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे कार्यक्रम में एक कार्यक्रम हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है, जो 121 बटालियन के द्वारा समय समय पर कराया जाता है। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम कार्यक्रम के तरह हम एक बच्चों का टूर भी करवाते हैं, समय समय पर बच्चों का खेल का भी कार्यक्रम हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तरह कराते हैं। इसमें एक टूर कार्यक्रम भी है जो बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भ्रमण करवाया जाता है। इसके साथ हम इस बार 2024-25 में 4 मेडिकल कैंप करना है, जिसमें 3 कार्य हम लोग कर चुके हैं। एक मछेरी, दूसरा रामकोट, तीसरा कठुआ और चौथा हम गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल जगतपुर में अभी कर रहे हैं। इस कैंप में हमारे साथ सिविल डॉक्टर भी 2 हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स, और हमारे सीआरपी के डॉक्टर भी हैं जो मेडिकल कैंप में सभी ग्रामीण को देख रहे हैं। हमारा मेडिकल कैंप करने का मेन उद्देश्य है कि जिस ग्रामीण दबित कुचले लोग हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके एरिया में जाकर हम मेडिकल कैंप लगाते हैं और उनको घर से बुला कर दवाई मुफ्त वितरण करते हैं। तो इससे आम लोग कितने खुश हैं आपके मेडिकल कैंप की वजह से? हमारा मेडिकल कैंप का मेन मतलब है ग्रामीण और पुलिस के बीच में मैत्रिक संबंध बनाना, और इनके किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता पड़े तो हम इनके पुनः दौड़कर मदद करें, और हमें किसी प्रकार से जो बात होती है जो हमें ये आकर हमें सूचित करते हैं भी अपने क्षेत्रों में। तो आज कैंप की वजह से लोग कितने खुश हैं ताकि उनके घर के पास ही आपने कैंप लगाया? आज की सुविधा जहां पर दी, गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल जगतपुर में हम कैंप लगा रखे हैं। इसमें ग्रामीण बहुत खुश हैं और बहुत घर से एक वृद्ध माता पिता सब निकल कर आके हमारे कैंपस में मुफ्त इलाज के लिए दवाई लेकर। The United States on Saturday launched airstrikes in Yemen, causing 24 fatalities in an attempt to target Iran-backed Houthi rebels and defend American interests, reported Reuters. The U.S. Central Command, in a post on social media, shared images of fighters taking off in an aircraft carrier and a bomb destroying a building compound in Yemen. They said on March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests.
deter enemies and restore freedom of navigation. US President Donald Trump also took to Truth Social to announce a military operation against Houthi rebels in Yemen and warned Iran to cut ties with the group. Addressing Iran, Trump said support for the Houthi terrorists must end immediately. Do not threaten the American people. The president, who has received one of the largest mandates in presidential history of worldwide shipping lanes. If you do, beware, because America will hold you fully accountable and we will not be nice about it. Trump claimed that attacks were in response to the Houthi rebels hindering shipping in the Red Sea and harming American interest. He also took a dig at former President Joe Biden for his inaction in dealing with the Houthis. The Houthis have vowed that the strikes will not pass without response. In a statement issued on the Al Jazeera TV station, they said, "Our Yemeni armed forces are fully prepared to confront escalation with escalation." Earlier this month, the US, a staunch ally of Israel, reclassified the Houthis as a foreign terrorist organization, stating that they had attacked the country's warships 174 times and its commercial vessels 145 times since 2023. Osmania University has prohibited agitations, dharnas and demonstrations within its departments, colleges, centers and administrative buildings. The university authorities said that they have viewed the matter seriously and decided to prohibit trespassing, stating dharnas and agitations, raising slogans, etc. in the premises of the college campus. The university has also prohibited preventing administrative authorities and staff from discharging their official duties and using unparliamentary and filthy language against university staffs and authorities. On reports of Osmania University officially banning agitations, dharnas and demonstrations on its campus, citing disruptions to academic and administrative activities, BRS leader Krishnag says the Congress government in Telangana, which claims to be the democratic government, and their leader Rahul Gandhi holds a red constitution across India and flashes it. But surprisingly, the historic Osmania University campus, which has been the epicenter of protests for the Telangana agitation which brought the statehood also, the Congress government has banned democratic protests. Government in Telangana, which claims itself as Mohabbat Ki Dukaan, as a democratic government, and their leader Shri Rahul Gandhi holds a red constitution across India and flashes it always. But surprisingly, at the historic Osmania University campus, which has been the epicenter of protests for the en masse Telangana agitation, which brought the statehood also, in such Osmania University campus, the Congress government has officially released a circular to prohibit and ban all the democratic protests from now onwards. It is really shocking that today Congress government is so intolerant that they cannot even receive criticism. On the same day, in the Telangana Assembly, Shri Revanth Reddy openly announces that he will announce his Congress cadre to attack, parade and strip social media users if they tweet or post in social media platforms against the Congress government and its failed policies. In the House of Assembly, while the session was on, CM Revanth Reddy used his worst language and threatened that they would even bring stringent laws against social media users who would be posting against the Congress government. So this Osmania University ban of protests and simultaneously Revanth Reddy threatening journalists, women journalists, social media users, YouTubers, that he would ask his lakhs of Congress people to attack the social media users. This shows that the Congress government does not believe in democracy. Congress is a hypocrite party. Rahul Gandhi has to react on this, respond on this, that how when Rahul Gandhi speaks of constitution, his own chief minister is actually murdering democracy.
As per an internal document of university, it says there are several incidents of students entering the campus and staging demonstrations and dharnas, resulting in disruption of administrative work and giving a wrong perception of the university to the society. Such incidents are causing adverse effect on the smooth functioning of the university, leading to delay in administrative and academic progress. The university further said that if any person is found involved in any activities mentioned, serious action will be initiated against such person as per law. Over this issue, PJP leader Ramchandra Rao also said that there is an undeclared emergency in Telangana by the government. The government has directed the Osmania University authorities to ensure that no dharna or gathering happens on the university campus. The university campus has been the hotbed of agitation, and it was students who helped carve out the state of Telangana. Declared emergency in Telangana by the government. The government has directed the Osmania University authorities to see that no dharna or gathering happens at Osmania University campus. The Osmania University campus, which has been a hotbed for the agitation of Telangana, and Telangana has been carved out because of the students' agitation at Osmania University campus and before the Arts College. Now the university has come out with an order preventing and prohibiting the students from offering any dharnas or gathering at Osmania University is nothing but suppression of the fundamental rights. The Osmania University is doing it at the behest of the state government because there is a lot of unrest among the students with regard to the employment, with regard to the scholarship, with regard to the many other issues, burning issues of the education. The government wants to suppress the students' agitation on these issues. So therefore this order has been passed. BJP condemns this order. That's all we have for now. Keep watching Hornbilltv.